Hello students, good morning. So today I am going to start the new topic of paper second of mathematics, that is sets and relation. This is the fifth topic in the index, sets and relation. In this topic, the first word sets, that you are very familiar with this name, that is sets, and this concept is studied in the previous standard, that is in the 9th standard, the concept of sets and the various operation between sets, right? Some definition of sets ये सब हमारा पिछले टॉपिक में पिछले स्टैंडर्ड में हुआ है सेट्स में, लेकिन फिर भी let us revise some definition, some concept of sets, some types of sets and some operations of sets in this lecture, that is in the 11th standard. So what is meaning of sets? Sets is a simple meaning, it is a collection. So the word set, it is a collection of the एक set word जो है, it is a collection of 3 letters. Set, this is a word is a collection of letters. First letter is S, second is E and third is what? T. Set is a word that is a collection of what? Letters. So not only collection of letters, the actual definition in this, that is what? It is a well defined collection of objects or elements, that is called as what? Sets. So what is meaning of well defined? So see the first example. Prime factors of number 210. Second example, odd natural numbers less than 10. Various types of triangles. So this is a collection of well-defined objects, because here what are the prime factors of number 210? So here 2 is a prime factor, 3 is a prime factor, 5 is also prime factor of this number 210 and 7. So this is a well-defined collection of objects. Odd natural numbers less than 10. What are that? 1, 3, 5, 7 and 9. Excuse me. 1, 3, 5, 7 and 9. These are the odd natural number but less than 10. Various type of triangle. So there are lots of types of triangle: equilateral triangle, isosceles triangle, right angle triangle. Lots of, you can mention here by comma. These are the various types of triangle. So these are the collection of well-defined objects or elements. But see this example. Top 5 talented actors of film industry. Second, cricket team of 11 best players of world. Top 5 talented actors of film industry and cricket team of 11 best players of world. So these are not collection of well defined. ये जो word है well defined, it is very very important. Well defined. This is a well defined collection of objects, but this is not well defined collection of objects, because top 5 talented actors of film industry. So two persons having different criteria for talented actors.
सो कोई भी दो स्टूडेंट्स को मैंने पूछा व्हाट आर द 5 टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, सो एक बच्चे का आंसर अलग आएगा, दूसरे का अलग आएगा, क्योंकि इस बच्चे को कोई और एक्टर टैलेंटेड लगता है, सो इस बच्चे को कोई और एक्टर टैलेंटेड लगता है. सो पर्सन टू पर्सन देयर इज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द टैलेंटेड एक्टर्स. सो सेम हियर, बेस्ट प्लेयर्स ऑफ 11 टीम ऑफ क्रिकेट. सो किसी आदमी को 11 बेस्ट प्लेयर कोई और लगता है, कॉमन कुछ और हो सकते हैं, लेकिन person to person it is different criteria for the best players of cricket. So that's why it is a not well defined collection of elements or well defined collection of objects. So these are not sets. ये sets हो नहीं सकते. These are what? Sets. ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट दिस इज वेल डिफाइंड, बट दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ व्हाट? पर्सन टू पर्सन इट इज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द टॉप 5 टैलेंटेड एक्टर्स, राइट, एंड 11 बेस्ट प्लेयर्स. सो डिफरेंट पर्सन टू पर्सन इसका क्राइटेरिया अलग हो सकता है. किसी को बैट्समैन पसंद है, किसी को फील्डर्स पसंद है, किसी को बॉलर पसंद होंगे. सो कोई 6 बॉलर लेगा तो 4 बैट्समैन लेगा, 1 विकेट कीपर लेगा. सो कोई आदमी 6 बैट्समैन लेगा, 4 बॉलर लेगा और 1 विकेट कीपर लेगा. सो किसी और को कोई 2 ऑलराउंडर चाहिए होता है. सो इट इज पर्सन टू पर्सन डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. सो दैट्स व्हाई ए टैलेंटेड, ए बेस्ट, it is not a well defined collection of objects, but this is a well defined collection of objects. So what is set? A set is collection of well defined objects or elements. So this is a very simple and very important definition of set. Set is a very fundamental concept of mathematics. यहाँ से मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस पार्ट है वो स्टार्ट होता है सेट से. सेट्स के बाद रिलेशन होता है, उसके बाद फंक्शन है, एंड फंक्शन के बाद एक्चुअल कैलकुलस जो बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो इंट्रोड्यूस होंगी. सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सेट, उसकी डेफिनेशन है. सो दिस 3 examples and these 2 examples are sufficient for the concept well defined. This is a well defined collection of objects, but this is not a well defined collection of objects. So what is said? Set is a collection of well defined objects or elements. Okay, now let us see some examples of sets. So we have to identify it is a set or not a set. It is set of collection of well defined objects or not. So first example, the collection of all months in a year beginning with the letter J. So all months हमें पता है January to December है, but what beginning with the letter J. So ये सेट हम डिफाइन कर सकते हैं. जनवरी है, जून है और जुलाई भी है. So these are the January, June and July. These are the set of months beginning with the letter J. So we can define it. So it is a well defined collection of objects. The collection of the most talented writers in India. So ये तो most talented अभी बताया था मैंने, most talented actors का. So person to person different criteria to determine the talent of writers. So this is not a well defined collection of objects. The collection of all boys in your class. So you can make a set of collection of all boys. सबका नाम, जितने boys आपके क्लास में हैं सबका नाम आप उस सेट में हम लिख सकते हैं. So it is a well defined collection of objects. A collection of novels written by the writer चेतन भगत. इसका भी आप कलेक्शन कर सकते हैं. जितने आपको पता है उतने novels written by the चेतन भगत. That is a 5 point someone, 2 states. That is a 1 night at call center. बहुत सारे बुक्स है. हाफ गर्लफ्रेंड. That is the novels written by the writer चेतन भगत. So it is a well defined collection of objects. चेतन भगत ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उसका सिर्फ आपको कलेक्शन करना है. इट इज अ क्लियर कट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स.
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. सो इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10 सबका डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं. इट इज वेल डिफाइंड और इट इज इनफाइनाइट बिकॉज इवन इंटीजर्स आर लॉट्स ऑफ. इट इज इनफाइनाइट सेट. सो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. लास्ट, the collection of the most dangerous animals in the world. So ये जो dangerous word है, it's person to person ये different criteria होता है. किसी बच्चों को dog dangerous लगता है तो किसी को it is not dangerous. So this word dangerous, it is a person to person different criteria to determine the dangerous animals of the world. So this is not a well defined collection of objects. So this is not a set. This is not a set. Baki, this is a set. This is well defined collection of objects. This also. But these two are not sets because set is a what? It is a collection of well defined objects. So ये well defined word है, इसके कुछ examples हैं. Is it clear? So ये talented, the best, dangerous, ये जो word है पर्सन टू पर्सन इसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट. इज इट क्लियर? सो विल टेक नाउ नेक्स्ट. सो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ सेट. सो वंस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ सेट. अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined objects. एक्चुअली सब 9th स्टैंडर्ड में आपको हुआ है. डेफिनेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑफ सेट in the previous standard, that is in the 9th standard. But a set is a collection of well defined objects. So here generally sets are denoted by capital letters A, B, C. And the objects in that set are denoted by small letters A, B, C. Objects means elements. Objects means also elements. Objects means what? Elements. Elements of set are denoted by small letters A, B, C and sets are denoted by capital letter A, B, C, X, Y, Z. कौन सा भी? X, capital Y, Z generally. Okay, so any element from set A, X is a element of set A. X is a element of set A, so we write X belongs to capital A. So we read what? X belongs to A. अगर A सेट में X एलिमेंट है तो वी से दैट X बिलोंग्स टू सेट A. अगर Y इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट B, Y अगर सेट B का एलिमेंट नहीं है सो वी राइट Y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B. This symbol is belongs to. This symbol उसको क्रॉस किया, that is meaning what? Does not belongs to. So we write this. Y does not belongs to B. So simple. A set is a collection of well-defined objects. Set generally denoted by capital letters A, B, C, D, X, Y, Z. And the elements or objects in that set are denoted by the small letters small a, small b, small c and the x, y, z also. Okay, suppose x is an element of set A, so we write x belongs to set A. So this is x belongs to A. This is symbol belongs to. अगर y set B का element नहीं है, y is not an element of set B, then we write y does not belongs to set B. Y does not belongs to. अगर ये belongs to है तो ये क्या है? Does not belongs to. So this is a basic concept of set. Set denoted by capital letters, elements denoted by the small letters. Now there are various methods to represent a set. Let us see the representation of set. Various methods to represent a set.
Okay, next is representation of set. So there are three methods to represent a set. तीन मेथड्स है, ये सब तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड में भी हुआ है. So there are three methods to represent a set. First method is what? Roster method or tabular form. Second is what? Set builder form or rule method. And third is Venn diagram. So let us see one by one. So first method is roster method. Roster method or tabular form. Second, set builder. Set builder form or rule method. And third method is Venn diagram. Venn diagram ये सब 9th स्टैंडर्ड में हुआ है. So there are three methods to represent a set. One is what? Roster method, that is also called as tabular form. Second is set builder form और उसको हम rule method भी कहते हैं. और third is what? Venn diagram. So Venn diagram is a geometrical representation. Geometrical representation वो triangle, circle and rectangle ये सब चीज वहाँ पे होता है. So let us see the first is roster method. So in roster method or tabular form, the elements are in listed form or enclosed in a curly bracket. Simple concept. Roster method में क्या होता है, tabular form में क्या होता है, all the elements are in listed method, in listed form. This is listed, separated by a comma and enclosed in curly bracket. Enclosed in curly bracket. This is a roster method or tabular form. Well renowned method है set represent करने की. So 5, 6, 7, 8, 9. This is a roster method. All the elements are in listed form, separated by a comma and enclosed in curly bracket. This is a curly braces. Right? So this is called as what? Roster method. So in this method elements are not repeated. If it is repeated, write once. अगर repeated भी है तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है. For example, sets is a word. It is a collection of letters. देखो SETS ये word है set की. कलेक्शन ऑफ लेटर्स कौन से? पहला यस है, दूसरा टी है, तीसरा टी है और एक बार यस है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स. बट यहाँ पर एक यस रिपीटेड है. सो वी राइट वंस. एक बार ही लिखना है यस ई टी. सो ये लेटर रिपीटेड. सो राइट वंस. सो एखादा लेटर, एखादा एलिमेंट, एखादा ऑब्जेक्ट रिपीटेड भी है तो उसको एक ही बार लिखना है. यस ई टी को हम ई टी यस भी लिख सकते हैं, नहीं तो टी ई यस भी लिख सकते हैं. सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमटेरियल. इट्स डजंट मीन, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है. ये भी सब एक ही है. कौन सा भी किसी ऑर्डर से लिखो, सिर्फ एक वंस लिखना है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन द रोस्टर मेथड एंड टेबुलर फॉर्म. वंस अगेन आई रिपीट. इन रोस्टर मेथड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट आर इन लिस्टेड फॉर्म. means what? Separated by a comma and enclosed in curly braces. Right? And in this the order of elements are immaterial, and if elements or objects are repeated, so write once. So this is the first method, that is called as what? Roster method. Okay, so we'll see the second. Let us see the second method of sets to represent a set, that is what? Set builder form or rule method. So in this method, that is set builder form or rule method, in this method all the elements of set satisfy some property. For example,
This is the first example. A is a set consist 1, 2, 3, 4 and 5. This is a clearly roster method, tabular form है. So we have to express this into rule method or set builder form. So first of all the elements of this set satisfy some property. ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं? ये सब नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6 है, लेस देन और इक्वल टू 5 है और लेस देन 6 है. सो वी कैन express this into set builder form, that is A is a set consist those element x such that x is natural number, x natural number है and x कितना है? लेस देन और इक्वल टू क्या है? 5. सो ये बन गया उसका रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स satisfy some property, right? So इसमें x एलिमेंट है, x नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, सेट ऑफ होल नंबर डिनोटेड बाय w, सेट ऑफ रियल नंबर डिनोटेड बाय r, सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय i, सेट ऑफ रैशनल नंबर डिनोटेड बाय q, right? n is a set of natural number, w is a set of whole numbers, R is a set of real numbers, I is a set of integers and Q is a set of what? Rational number. So ये कौन से है? It is a natural number but less than or equal to 5. X belongs to n but x is less than or equal to 5. Less than or equal to 5 लिखो, नहीं तो less than 6 लिखो. Less than 6 कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. So इसको रीड कैसे करेंगे? A is a set consist x element such that this is a oblique or line such that x belongs to n. x belongs to natural number. सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं, एंड दिस कॉमा इज एंड x is less than 6, less than 6 or less than or equal to 5. x is a set consist x element such that x belongs to natural number and x is less than 6. less than 6 भी लिख सकते हैं, नहीं तो less than or equal to 5 भी लिखो तो यही सेट बन जाएगा. सो वी कैन एक्सप्रेस सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये बी सेट है, बी सेट कंसिस्ट एक्स एलिमेंट, एक्स ही लिखो हर बार. सो दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. देखो एक्स इज बी इज अ सेट कंसिस्ट एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, एक्स less than or equal to 3 and greater than or equal to -3. less than or equal to 3, greater than or equal to -3. सो ऐसे ये सेट बिल्डर फॉर्म है और रूल मेथड है, हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है. सो हाउ टू राइट? ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो इंटीजर होना जरूरी है. इंटीजर मीन्स व्हाट? ये रियल लाइन जो होती है वहाँ पर जो नंबर होते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दैट आर द इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या. सो व्हाट आर दैट? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So this is a set. This is a set builder form. This is set builder form. This is a roster form. So we can express a set in both form, in set builder form and tabular form. But some sets we can't express in both form. For example, C is a set consists those element x such that x belongs to rational number. Rational number means what? A number written in p by q form.
where q is not equal to 0. So this is rational number. So I say rational number denoted by generally capital Q. So x less than equal to 5 greater than or equal to minus 5. So this is a set builder form. X is a rational number, but x is less than or equal to 5, greater than or equal to minus 5. This set cannot express or represent in roster form, roster method. So rational number -5 to +5 इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. लॉट्स ऑफ है, बहुत सारे, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते इस फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? लिस्टेड मेथड में इसको राइट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दिस सेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड, बट सम सेट्स कैन बी एक्सप्रेस इन बोथ फॉर्म. मीन्स व्हाट? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? all elements of set which satisfy some property, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वो satisfy करना चाहिए. So we can write in this way. This is a rule method. So उसको रीड कैसे कर सकते हैं? A is a set consist x element such that x belongs to natural number and x is less than 6. So we can write this 1 2 3 4 5. Less than 6 कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5. सो ये दूसरा एग्जाम्पल, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, उसका हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था. -3 -2 -1 0 1 2 3. सो दिस आर द इंटीजर. -3 to +3 तक कौन से इंटीजर है? ये इंटीजर है. सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. इन रोस्टर मेथड द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन लिस्टेड फॉर्म, separated by comma, enclosed in curly bracket. Here also enclosed in curly bracket, but that elements must be satisfy some property, some mathematical property or any property. So this is what set builder form or rule method. So we'll take some examples. अब आप कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि that examples can written in both form, that set written in both form, roster method and also set builder form. So let us see the first example. A set vowels of English alphabets second B set of even integer, even natural number. Even natural number. And third example, set of odd natural number. So इसको हम पहले रोस्टर मेथड में लेंगे. A is a set that consists English vowels of English alphabet that we know, A, E, I, O, U. These are vowels. There are 5 vowels in English alphabets and remaining 21 are consonants. Total 6 alphabets in English. So this is a roster method. So we write in set builder form. These elements satisfy some property, not mathematical property, but कुछ ना कुछ property define करता है, satisfy करता है. So x लिखो, consider x element such that x is vowels of English alphabets even natural number. even natural number B set लिखा था मैंने यहाँ पर. B set even natural number कौन से हैं? 2 है, 4 6 8 even. So even numbers means what? Multiple of 2. So we can write in set builder form. B is a set consists x element such that it is a 2x. It is 2x. X is what? Natural number.
सो x नेचुरल नंबर है बट व्हाट 2x है, x से 1 लिखो, 2 into 1 2, 2 लिखो, 2 into 2 4, 3 लिखो, 2 into 3 6, 2 into 4 8. So x natural number. Natural number means what? Starting from 1. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5. You will get this, right? So this is a even natural number. Now odd natural number. What are odd natural number? 1, 3, 5, 7, infinite setting. So we have to write in what? Set builder form or rule method. So ये जो all elements of this set which satisfy some property, that is what x element is such that it is a 2x minus 1. 2x minus 1 में कहाँ से लिखा? देखो x नेचुरल नंबर है, नो डाउट इट इज नेचुरल नंबर. यहाँ पर 1 लिखो, 2 into 1 2, 2 minus 1 1. यहाँ पर 2 रखो, 2 into 2 4, 4 minus 1 3. 3 रखो, 2 into 3 6, 6 minus 1 5. यहाँ पर 4 रखो, 2 into 4 8, 8 minus 1 7. So 2x minus 1, that is a odd natural number. 2x, that is a even natural number, where x is what? Natural number. So these are some examples we can express in both form. फर्स्ट इज रोस्टर मेथड, उसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. सो दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ दैट बोथ मेथड्स, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट lecture we will see the Venn diagram. You also very familiar with this concept, Venn diagram. Venn is a name of mathematician who introduced set in geometrical way. How to represent a set in geometrical way? Geometry means what? Circle, triangle, rectangle. उससे भी हम set define कर सकते. So we'll see in next video lecture. So today I will stop here. Thank you very much. So once again I repeat, what is a set? Set is a collection of well defined objects. Okay. So thank you very much.